चाहिँ हामी यहाँ नदीमा आएको छौँ। अब यहाँदेखि बोट चढेर ट्याक्क यहाँबाट हामी चाहिँ 1-1.5 घन्टाको टुर हुन्छ आज यो के अरे पेरिसको नदीमा। नदी भन्ने कि खोला भन्ने के हो, त्यसमा हिँडेर मजाले यहाँ हिँडाइ हुन्छ। चरो घाम लाग्छ, यस्तो छ। टेम्परेचर चाहिँ 29 डिग्री छ, अलिक गर्मी छ। हामीलाई चाहिँ ठिकै छ के अरे। अब यताको मान्छेलाई चाहिँ बेसरी उ भएछ होला, गर्मी भएछ होला। अब यहाँ हामीलाई एउटा खाना एउटा बकेट लियो, मैले बकेटसँग एउटा बियर पनि थोक्नु पर्ला छ। अनि आइफल टावर यहाँ चाहिँ माथि यस्तो छ। आइफल टावर यस्तो छ। आइफल टावर भनेको मान्छेहरू माथि तलमाथि झरिरहेको छ लिफ्टबाट। अनि दामी देखेर चाहिँ यहाँबाट आइफल टावर सही देख्दो रहेछ हो। गुड। कति राम्रो देखेको आइफल टावर। यहाँ खोलाहरू, यो खोलाबाट हिँड्ने हो है। यहाँबाट चाहिँ आइफल टावर चाहिँ मजाले देख्दो रहेछ। त्यो माथिबाट पुरा गइरहेछ क्या मान्छे बोकेर माथि है। यो चाहिँ मजाको आकर्षक देखिएछ। अब अलिकति यहाँ पुगेर खानाको चाँजो बाजो हुन्छ। खानाको चाँजो भइसकेपछि यो आइफल टावर अब यसरी जानु पऱ्यो। आहा, ए दामी देखेछ। हामी यो पुलको नजिक आइपुग्नुलाई हाम्रो गाडी उता पार्क गरेछ। के अरे लन्डनको थेम्स नदी जस्तै नदीको त्यो हिँड्ने बोट हिँड्दो रहेछ यहाँ है। ओ आइफल टावर अझै नजिकबाट हेर्नुहोस् त कस्तो दामी देखेछ है। अर्को नजिकबाट झन् दामी देखिँदो रहेछ। यहाँनिर रेस्टुरेन्टहरू रहेछ। अनि यहाँ के हो भएर यहाँ खाना लिएर मान्छेहरू अब त्यसो चढ्दै जाने हो पारि त्यसरी हिँडिरहेको छ है। हामी चाहिँ आइफल टावरको जरामा आयो म चाहिँ। रेस्टुरेन्टहरू खाना ठाउँहरू होइन त कि केही 2-4 शब्द जाओस् छ केही। आइफल टावरमा पनि आइयो ठ्याक्कै त्यसको तलपट्टि यति हल्को रहेछ। एउटा फोटो चाहिँ बन्द होइन पहिला फोटो खिच्नु। मान्छेहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ टनटना टन है फोटो खिच्ने ठाउँ। अहिले चाहिँ यहीँदेखि आइयो। यो पेरिस भनेको यो पेरिसको सबभन्दा आइकनिक ठाउँ। यो पुल चाहिँ अलिकति बढ्छ अरे नि एकदम के अरे कति इन्च जति माथि पनि जान्छ अरे यो पुल। पुल भनेपछि यो के अरे यो टावर है यस्तो छ। आएको छ ट्याक्सीहरू पनि के अरे टेस्ट लाग्यो। ट्याक्सीहरू देखि कति है बाटो चाहिँ बिजी छ। ट्याक्सीहरू टोयोटाको ट्याक्सीहरू है। अनि मान्छेहरू त के ट्राफिक सबै हान्दियो त म पनि हिँड्यौँ हिँड्यो ल हुँदो रहेछ युरोपतिरमा त रोक्छौँ के अरे यहाँ त हिँड्दै ल सबै हिँड्दैन भने क्रस हान्ने ल। ए यता जानु थाल्छ होइन कता जाने रहेछ माथि
घुम्दै जाने हो क्या माथि De notre drapeau, et on a la chose tendance de mettre un petit peu partout, sur tous les grands monuments et sur tous les grands bâtiments. D'ailleurs, vous pouvez déjà en apercevoir un dans le paysage qui est assez haut dans les airs, presque dans le ciel. As a good nation, we are of course very proud of our flag, and we have the tendency to put it quite everywhere on all big buildings and big monuments. You can actually already spot one quite high in the landscape. Et cette fois-ci, il se trouvera à bâbord. And this time it is actually on port side. Et donc sur la gauche. And so on the left. Ce drapeau français, il est relié en bâtiment qu'on appelle le Grand Palais, que vous pouvez reconnaître et vous en souvenir parce que sa toiture était en verre, c'est d'ailleurs la plus grande toiture en verre de toute l'Europe. This French flag on the left is linked to a building we call the Great Palace, and you can remember it afterwards because the roof is made entirely in glass. It is actually the biggest glass roof of Europa. Mais vous imaginez bien qu'à l'époque, on n'a pas juste voulu construire un bâtiment pour se dire on a la plus grande toiture en verre d'Europe. On avait quand même une utilité. Quand on l'a construit en 1900 pour l'exposition universelle, on ne voulait pas utiliser d'électricité à l'intérieur. Mais pas d'électricité, pas de lumière, et utiliser autant de bougies tous les jours, ça aurait coûté de l'hiver, donc pas la place. On s'est dit qu'on allait juste faire la toiture en verre, comme ça on utilise directement le courant du soleil à la place. You can guess that we didn't want just the title of biggest glass roof of Europa. We actually, when we built this place in 1900 for the World's Fair, we didn't want to use electricity inside. But no electricity, no lights, and you can guess that having so many candles inside this place to light it all up would have cost quite a lot, so we dropped the idea and instead we made the roof in glass so we can directly use the power of the sun instead. D'ailleurs, si vous êtes à Paris pendant la période historique, donc en France, on dit que si vous travaillez à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas vous permettre d'oublier l'histoire française. Quand vous passez des lois, vous devez continuer au travail et vous marchez sur des pierres de la Bastille. So in France, we say that if you are working inside the Assemblée nationale, you can't forget French history because coming to work, you have to walk on some stone of the Bastille. So when you are passing the laws, never forget French history. Le prochain bâtiment, c'est mon préféré. Il va se trouver sur la droite. Il y a un drapeau français juste au-dessus et sa toiture est partiellement dans la station. Il manque un modern railway station, so again, US. Sur la gauche, le grand bâtiment, c'est le musée que l'on considère comme le plus visité. You can still see some part of it when you go on the lowest part of the museum. It was also a living place for French monarchs at the time. So quite a nice palace to live inside. माइकलको टुर पनि मजाकै लाग्यो मेरो यो माइक्रोफोन चाहिँ बिग्रेछ माइक्रोफोनले काम गर्दैन अब यसैबाट पानी जान्छ We know that it is because of the devices and self-replace all our weapons, which is for these two techniques, and inside there is academic process regulating and dictating the regulation of the French language. मजा छ सिनमाथि À l'époque, le français c'était une langue beaucoup plus simple. Si on pouvait हामीले दुईजनाले डल्ले हानेको है सल्लाह बना काम के ल्याम न आधा आधा खायो त्यसले पनि धेरै पनि खायो त्यसको त माइक्रोफोनको ब्याट्री सिद्धिएछ क्या अर्को हाल्ने बिर्सिहाल्यो The French language used to be much easier. If you could hear and comprehend someone, you could write it any other way. The thing is, that wasn't the case. They complexified the language by adding double letters, making so that if we encounter each other, I could tell, or you could tell if I had I was coming from going to ground. When we talk about French language, we talk about Moliere's language. Know that Moliere and the academic process despise each other because Moliere used to be rare with the language. He loved having multiple orthograph voices.
यो ठाउँमा अब टाढा टाढाबाट धेरै टुरिस्ट हेर्न आएको छ होइन। अब यस्तै हो, अब यो ठाउँ एकदमै पर्यटकहरू आउने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि बेसरी व्यस्त हुन्छ, बेसरी बिजी हुन्छ है। तर एन्ड अफ द डे एभ्रीबडी इन्जोय, सबैलाई रमाइलो लाग्छ, सबैले मनोरञ्जन गर्छ होइन। ठाउँ हेर्नुहोस् नि तपाईँहरूले, स्वर्ग जस्तो छ। अनि केटीले जुन आफ्नो फ्रेन्च भाषामा पनि उल्टा गरेछ अनि इङ्ग्लिसमा पनि भन्छ कि यो साइडको ठाउँ के हो, कस्तो हो, कस्तो स्टोरी बुक छ भनेर यसले त्यसको बारेमा अहिले भन्छ, भनिरहेको छ। इङ्ग्लिसमा पनि भन्छ, उसमा पनि भन्छ, के अरे फ्रेन्च भाषा पनि भन्छ। मान्छे त्यही दुईवटा भाषा उल्टा गरेर सुन्छ। तर अलिक गर्मी छ, जस घाम चरक्क लागेको छ। एनिवे एभ्रीबडी इन्जोय। Donc cet endroit, c'est un restaurant qu'on appelle la Tour d'Argent, qui a donc inspiré le film de Ratatouille. C'est un restaurant qui est assez onéreux pour autant, donc si jamais vous avez l'occasion de goûter cette nourriture, n'hésitez pas à revenir me dire si la nourriture était bonne, j'ai vraiment envie de savoir. En général, les personnes se mettent soit sur la grande place à droite, soit dans toutes les moitiés et les arcs de cercle que vous voyez tout au long des quais. Usually people dance on the highest platform or in all those half circles that you can see all around the deck. Nous allons bientôt arriver la moitié de Paris. If you like music and dancing, the gardens on your right will be your favorite spot of Paris. On appelle cet endroit les quais Saint-Bernard. Donc vous pouvez venir vous balader dans les jardins pour voir des œuvres d'art contemporain, mais aussi sur certains soirs, des personnes ramènent leur musique et donnent des cours de danse gratuitement. Donc vous pouvez apprendre à danser avec vos amis comme avec des inconnus, ce qui en fait une atmosphère très sympathique. So you can come and take, we'll have a bit more wind. So if like myself you have a hat or a cap, make sure it is well put on your head, because sometimes by the way the green bridge that you can see on the left and on the right side of the island is the same bridge. It was actually built in a diagonal line, so you have a better point of view on the map when you are on it. So much differences of that come back to this. Sur la droite, la grande terrasse que vous voyez, c'est un motel qui est aussi un restaurant, le plus gros aussi, qui s'appelle le Bonnet. Je crois qu'il est un petit peu onéreux, mais si vous guess which animals you must use to have in your hotels. À l'époque, les enfants pouvaient dire qu'on avait des lions, des gorilles, les Français on n'était pas si courageux. On avait un animal beaucoup plus pratique, on avait des vaches. C'était donc l'île aux vaches, même si ça n'a pas de rapport, je me dis que c'est un petit peu prémonitoire, parce que désormais on trouve les meilleures places de Paris sur l'île Saint-Louis à la maison d'Arthur. Donc je trouve ça assez ironique. So, children believe that we have lions or gorillas. French people weren't as courageous. We actually have much more practical animals. We used to have cows, so it was the island of the cows. And for me, I believe it was a big turning turn, because today we say that you can find the best ice cream of all Paris on the island Saint-Louis in a place called Maison Berthier, so House of Berthier. Si vous allez sur le livre, vous le verrez forcément, c'est inscrit sur le façade de Madame. If you go on this island, you will see the same written quite a lot from We are at the most magical spot of our cruise, because the Bridge Mary in front of us has a legend around it, calling it the Bridges of Wishes. They say that if you see someone yet you love or going on there, the wish is supposed to come true. Pas besoin d'embrasser un partenaire, vous pouvez embrasser une famille, et si vous voulez embrasser personne, juste fermez les yeux. You don't have to kiss a problem, you can kiss families, friends. If you don't want to kiss anyone, just close your eyes and take a little wish. Sachez-le, vous avez entre 1 mois et 1 an que votre vœu se réalise. Le temps est une période assez longue, mais vous avez plus de temps pour faire que notre vœu se réalise, c'est plutôt pas mal. You have between a month and a
I agree, it's a weird, large schedule, but you know what? More time to make our wish come true, so nice for us. Peut-être que certains d'entre vous commencent à bien ressentir la chaleur. Si jamais c'est le cas, sur la droite du bateau, vous avez une piscine. If you are hot today on the boat, just know that on the right side, we actually have pools. On vous autorise à vous baigner dans la Seine, mais on veut quand même vous protéger des bateaux. C'est pour ça qu'on a toute la structure autour. Je vous dis juste que soit on avait beaucoup d'envie à pêcher dans la Seine, soit que les prix étaient très bas à l'époque. I know that not everyone will go take a swim inside the Seine because we know the level of cleanliness isn't the best. But still, since they opened the pool, I believe it is at least the minimum. And just know that in Middle Age, the Seine was so clean that you could actually fish hills in the Seine, so much so that some people were able to pay their rents by the fishing that they did in the Seine. Telling you either that the rate was so low or that we have too many fields in the Seine. You choose. Because at the time, whether you were wealthy or poor, you would get welcome and treated as equal. Unfortunately, the goodness was also the downfall because many diseases were able to spread quite quickly. Sur la gauche, un peu avant de disparaître, vous avez une horloge d'eau. And when you put people to the screen on the left, you have a golden clock of the entries. C'est la première horloge publique de Paris. She is the first public clock of Paris. Comme vous n'avez pas de montre pour savoir le temps, la seule façon c'est de utiliser la cloche de l'église. Donc si vous arrivez à l'heure, à un rendez-vous que vous avez donné à un ami, vous dites cette heure. The best of churches to know the time. So that's why we have the first public clock put there in the middle of Paris, so you will be on time if you are to the main court of the station, which is the highest judiciary court in France. Meaning that if you were to start a revolution today in France, you should start it on this island. I didn't tell you to start a revolution, but just an information I gave you. Donc on a dû retirer les canards, donc les poules sont encore dans la Seine, mais aussi jetés malheureusement. On peut encore en voir, mais sachez-le, si vous êtes en train de mettre le chat, il faut payer une petite amende qui est assez salée. Not only sending rockets on the bridge to show that the love was strong and powerful during time, but unfortunately speaking, the love was so strong and powerful, the bridge started to collapse under the weight of all his love. And we had to cut them off, so some of them are still in the Seine and some were unfortunately thrown away. And just look at, even though you can still see some of it on this side of the bridge, if you are still hanging a rocket on the bridge, you can actually receive a fine quite expensive, so I wouldn't recommend you doing it. Finally, after our already. So it's here.
म चाहिँ आइफल टावरमा आज माइक्रोफोनले चाहिँ काम गरेन है हेर्नुपर्ने ठाउँ यही हो पेरिसको लन्डन पेरिस भन्छ नि यही रहेछ लन्डन अनि साना साना भन्छ लन्डन त पेरिस छ भन्छ यही रहेछ अब यो चाहिँ वाइनको चुस्की लिँदा लिँदै पनि होइन वाइनको चुस्की लिने साइड सिन हेर्ने गर्दा गर्दा अब लगभग हामी चाहिँ अन्तिम उसमा आइसकेका छौँ अब लगभग हाम्रो सिद्धिसकेको छ केही समयभित्र सामान्य रूपमा हेर्ने कुरा यही हो हामी फेरि भेटौँला है थ्याङ्क यू